Good morning, dear students. How are you all? We are going to do exercise C of page 8. Okay, open your rough notebooks, prepare the page, write down the topic. Now, write the question, which is grammar. ग्रामर से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है विच वी आर गोइंग टू राइट. ओके, rewrite the sentences changing the underlined verbs to the past tense. जो वर्ब्स हमें गिवन है तो उनको हमने पास्ट टेंस में चेंज करना है. मीन्स वी हैव टू चेंज द वर्ब्स टू सेकंड और थर्ड फॉर्म. इसमें से कुछ रेगुलर वर्ब्स भी होंगे, इफ़ यू रिमेंबर वी डिड दिस, और कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होंगे. ओके, रेगुलर वर्ब्स आर दोज जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे हों, एंड इरेगुलर आर दोज जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो. ओके, आप लोग देख लेंगे यहाँ पे. ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तूफान में, इट रेन एंड पोर. नाउ लुक, these two are verbs over here. We have to change its form. How? Just look. During the storm, it past में change करना है. Remember this. Rained and poured. During the storm, it rained and poured. Put the full stop. Now, look at the second one. I fall off the swing and bang my head. स्विंग से नीचे गिरा और सर जख्मी हो गया. I, now look, this one fall is irregular. Okay, I fell off the swing. And bang my head. Put a full stop. Now, the third one is Nick run in the race and win it. Now, run को change करना है, win को change करना है. Okay, these are the verbs, okay, which I have underlined for you. Nick ran, क्योंकि पास्ट में चेंज करना है ना. इन द रेस, एंड won it. Full stop. The fourth one is we lived in that house before we moved. The fifth one is I kicked the ball over the post and scored. Now look,
change the underlined verbs to past tense and rewrite the sentences like this in your rough notebooks. Now note down your homework. Learn words meanings of unit 1. They are very much easy words. Okay, do learn that.